Yes, good afternoon student. This is second chapter from your grammar book. Yesterday I explained F part, underline the adverb clause in each of the following sentences. Also write the type of adverb clause. So remaining sentences we'll discuss today, and I am explaining from 12. The minister wants to increase taxes though his party disagrees. In this sentence, though his party disagree. Though his party disagree. This is adverb clause. So you can underline though his party disagree. And write the type of adverb clause. Because there is contrast. यहाँ मिनिस्टर क्या कहते हैं? मिनिस्टर वांट्स टू इंक्रीज टैक्सेस. मिनिस्टर टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं, बट जो पार्टी वो क्या है, इसके डिसएग्री है. सो देयर इज कंट्रास्ट हेयर. तो यू कैन राइट एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लॉज ऑफ contrast. Next one, even though I studied every day, I did not get the score I needed. यहाँ क्या है? यहाँ भी in this sentence you can underline even though I studied every day. So this is adverb clause. इस sentence there is also a contrast, because even though I study every day, I did not get the score I needed. जितना मार्क्स मुझे चाहिए उतना नहीं मिला, but he studied every day. So you can write here adverb clause of contrast. Of contrast. Number 14, wherever he goes I'll go. जहाँ कहीं भी वो जाता है मैं वहीं पे I'll go. तो this is wherever he goes. Underline adverb clause, wherever he goes I'll go. This is where means जहाँ भी, जहाँ means place. तो this is adverb clause of place. Of place. Number 15, I am not sure where I put my pen. In this sentence, where I put my pen, this is adverb clause. Where I put my pen, on which place, it is also adverb clause of place. Of place. Next, the man ran as if wolves were chasing him. इस सेंटेंस में क्या है? द मैन रेन, आदमी कैसे दौड़ा? एज इफ वॉल्स वर चेसिंग, मानो भेड़िए उसका पीछा कर रहे हों. तो एज इफ वॉल्स वर चेसिंग हिम. सो दिस इज adverb clause. You can underline as if wolves were chasing him, and kind adverb clause of manners. Adverb clause of manner. MANNER. Is it clear? Now next sentence, the thief ran away when he saw the policeman. The thief ran away. Thief means चोर. Ran away
दौड़ गया, भाग गया। कब? When he saw the policeman, जब उसने पुलिसमैन को देखा। दिस इज टाइम, कब देखा? जब देखा तब वो भाग गया। तो यू कैन अंडरलाइन when he saw the policeman, adverb class, and you can write adverb clause of time. Next one, John managed his family as carefully as his father does. In this sentence जो जॉन है वो अपनी फैमिली को ऐसे मैनेज करता है बहुत ध्यान से, कैसे? जैसे उसके पापा करते हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये उनका जो फैमिली को मैनेज करने का जो वे है वो कैसा है? बिल्कुल अपने पापा जैसा ही है। सो वी कैन राइट हियर एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, और वी कैन राइट ऑल्सो कंपैरिजन, कि हाँ उसके पापा के साथ कंपेरिजन, लेकिन बेटर जो कौन सा होगा वहाँ पर? मैनर होगा। सो यू कैन राइट एज केयरफुली एज इज फादर। दिस इज एडवर्ब क्लॉज, और उनका मैनर कैसा है? बिल्कुल अपने पापा जैसा। तो वी कैन राइट एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। यहाँ कुछ हद तक कंपेरिजन भी शो होता है, लेकिन जो बेटर है वो कौन सा है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। तो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. I dictated all the parts of this chapter. So today you will revise complete chapter and learn definitions and fill all the sentences in your textbook and learn them. Thank you.